Welcome my dear student, how are you and what is going on? I hope your study is going on. So today we discuss about very interesting topic which is the error analysis in the chapter unit and dimension analysis. Okay. So what is error? What is error? और हमें एरर एनालिसिस और एरर करेक्शन क्यों करना चाहिए? ऑब्वियसली टू एक्यूर मोर रिजल्ट, टू प्रिसाइज द रिजल्ट, टू गेट मोर एक्यूरेट रिजल्ट, we have to do error correction. Now what is error? Now if we do some experiment, then we get the value of some quantity. It is called measured value. This quantity is called measured value, which I measured by experiment. This is called measured value. Now what is the actual value of the some quantity is known as true value. Okay, the difference in true value and measured value is called as error. Therefore, the difference between true value minus measured value is known as error. Okay. Now, how can we measure this error? So, there are two types of error in experiment. One is systematic error and other is random error. So, if we classify it, we classify the error, therefore, we get error. One is by cause, कि इसका कारण क्या है. One is by cause and other is by magnitude. Okay. One is by cause and other is by magnitude. Cause, by cause there are two types of error. One is systematic error. Systematic error. Other is random error. By magnitude we get three types of error. One is absolute error, mean absolute error, and fractional error. And other error is occurred which is called percentage error, that is fractional error into 100. Okay. This is the classification of error in physics. By cause, what is systematic error? देखिए, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करता है तो क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाता है. कभी कभी जीरो एरर करेक्शन करना पड़ता है. तो कभी हमको क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट अगर सही नहीं हो तो जिस टाइप ऑफ एरर आता है वो है सिस्टमेटिक एरर. दिस कैन बी रिमूव्ड. सिस्टमेटिक एरर कैन बी रिमूव्ड बाय zero value correction or by more accurate instrument, and there are other reasons of systematic error is our negligence. When we neglect some factor which affect the experiment, then this systematic error occur. Suppose we measure the time period of a pendulum t. We know the value t is equal to twice pi under root L by G. If we neglect the effect of air resistance. Here we neglect the effect of air resistance. So due to air, when error occur, it is goes under systematic error. And other is due to the atmosphere. That is the temperature, pressure, humidity, and so on. So systematic error can be removed.
Random error, we don't remove random error because its cause is unknown to us. हमको पता ही नहीं चलता कि किसकी वजह से ये एरर हुआ है, तो उसको कहते हैं रैंडम एरर. फॉर रैंडम एरर वी कैन मेजर द वैल्यू रिपीटेडली एंड टेक द मीन और एवरेज value of the quantity. We take the mean or average value of the quantity. And magnitude of error is absolute error, mean absolute error and fractional error. Now what is absolute error? We can go with some example. Okay. अगर एग्जाम्पल नहीं दिया तो समझने में दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगा. और अगर थ्योरी सही तरह से आप लोग समझ में आ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल्स झट से हो जाएगा. ओके. सो सपोज we take a where. Now with a meter scale we can measure its length. Suppose we measure 5 times. And the value are A1, A2, A3, A4 and A5. Okay. Now what is the mean of this quantity? We know A mean is just take the average of this value, that is A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 divided by 5. Okay, this is called true value. And A1, A2, these are called measured value. Okay, as we measure it, so this is called measured value. Now the difference is true value and measured value is called error, and A mean is the true value or mean value. Now if we take absolute error in A1, that is delta A1 is given by difference between mean and the measured value, that is we take A mean minus of A1. Okay. Absolute error in A2 is delta A2, that is A mean minus of measured value A2. Delta A3, A mean minus A3. And this quantity will be both positive or negative. Okay. ऐसा बात नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ A1, A2 and the value of mean, their difference must be positive or negative. Now this is absolute error. Now what is mean absolute error? Mean absolute error. Now mean absolute error का mean होगा, that is mean absolute error is mod of, यहाँ पर हमको सिर्फ प्लस वैल्यू लेना चाहिए, मॉड, इसलिए मॉड में आता है ये फॉर्मूला, दैट इज मॉड ऑफ डेल्टा A1 mod delta A2 mod of delta A3 and so on. That is, if we take 5 quantity, then mod of delta A4 plus mod delta A5 divided by 5. You can go with relative error, or so this is mean absolute error, and we go with a mean absolute error, and we can go with fractional error. Fractional is the ratio of the true value, ratio of mean absolute error, that is delta A mean by delta by A mean, delta A mean by A mean, or mean absolute error to the
true value or mean value of the quantity is called fractional error. Delta mean by A mean, where delta A mean is, this is mean absolute error, this is delta A mean. If we take it known as delta A mean, and we know the value of A mean, that is A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 divided by 5. So if we get delta A mean, we know delta of A1, delta of A2, delta A3, del A4 plus del A5 divided by 5, and which is A mean, that is A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 divided by 5, 5 cancel out. So this is the formula of fractional error. Okay. So now if we, what is percentage error? The fractional error multiplied by 100 is called fractional error. Fractional error is delta A mean by A mean into 100%. So हमने सभी फॉर्मूला को बता दिया है, प्लीज इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा. फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, mean absolute error, and so on. Now we can go with some formula and numericals. Okay. Suppose the refractive index of glass is found. Refractive index of glass is found N1 equal to 1.49, N2 equal to 1.50, N3 is equal to 1.51, N4 equal to 1.54, and N5 equal to 1.48. Find fractional error and percentage error. So हमने इन एनी एक्सपेरिमेंट हमने फाइंड आउट किया है कि ग्लास का प्रतिसरांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा. सो 5 टाइम्स हमको 5 डिफरेंट वैल्यू मिला. सो इट इज ऑब्वियस दैट देयर विल बी एरर इन मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो वी कैन फाइंड आउट द एरर. सो एज वी नो दैट हमको इन मीन फाइंड आउट करना होगा, देन डेल्टा ई मीन फाइंड आउट करना होगा. ओके, एन मीन मीन्स 1.49, 1.5, 1.51, 1.54 plus 1.48 divided by 5. So if we put it in calculator, what we can get? 1.49 plus 1.50 plus 1.51 plus 1.54 plus 1.48. 7.52 divided by 5, which is get 1.504. 1.504. This is the true value. Okay, this is true value or mean value. Now, what is delta n1? Delta n1 is n mean minus n1. n आप अपने कैलकुलेटर में हिसाब कीजिए, n mean minus n1. It can be positive or negative. So n mean is 1.504 minus 1.49. We can get it 0.014. Okay. Then delta n2, n mean minus of n2. Therefore, what we can get? 1.504 minus 1.50, 1.504 minus 1.50, we can get 0.004, 0.004. इसी तरह हमको
डेल्टा n3, n4 और n5 को निकाल लेना है। सो फॉर्मूला वही होगा। सो if we take n3, that is 1.51, 1.504, 1.504 minus 1.51, that is 0.006, 0.006, but with a negative sign, because 1.504 से 1.510 ज़्यादा है, and therefore delta n4 he gave 1.504, 1.504 minus 1.54, 1.54. So you can get minus 0.036, and delta n5, the value of delta n5 is 1.504 minus 1.48, 0.024 with plus 0.024. Okay. Now we can find out the value of delta A mean. So if we take delta A mean, delta n, here n as effective index is, that is, take mod of this value, that is mod of this value means only the positive quantity 0.14 plus 0.004 plus 0.006 plus 0.036 plus 0.024 divided by 5. So what is we can get 0.014 plus 0.004 plus 0.006 plus 0.036 plus 0.024 divided by 5. So we can get 0.0168. 0.0168. So हमको अब फ्रैक्शनल एरर निकालना है। So we can get कि delta n fractional or n fractional, we can get fractional error, which means delta n means minus divided by n means, that is 0.0168 divided by 1.504. So divided by 1.504 करता हो 0.01117, sorry. So we can get it 0.011011. So 0.11 यहाँ पे 1 होगा, that is 1.1%. 1.1%. Okay. In this way we measure the error. एक बार कैलकुलेशन को चेक कर दीजिएगा। Next we go as combination of errors. Next we go with combination of error. Combination of error means if a quantity is x equal to a plus minus b, then its error related to x is delta x must be plus minus delta a plus delta b. Okay, delta x plus delta a plus delta b. If x equal to ab, then delta x upon x equal to plus minus delta a by a plus delta b by b. Okay,
delta A by delta A B, x equal to A by B. Therefore, the same formula delta x by x is plus minus delta A by A plus del B by B. अगर कोई फॉर्मूला है जिसमें मल्टीप्लाई होता है दोनों क्वांटिटी और एरर पूछता है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर डिवीजन में आता है वो क्वांटिटी का रिलेशन देन दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड. एंड इफ x इक्वल टू a to the power n by b to the power m, then the error in delta x by x, that is fractional error, is given by n del a by a plus m del b by b. Write down this 4 basic formula of combination of error. Now we can go with a problem. The radius of a sphere is measured to be 2.1 plus minus 0.5 semi. 2.1 is the true value and 0.5 is the error. Calculate its error in surface area. Error in S means surface area. Calculate the error in surface area with error limits. Then what we can do with error limits? So, from the relation as we written that area of sphere is given as S equal to 4 pi r square. Therefore, delta S by S is equal to, ये जो पार्ट है कांस्टेंट पार्ट ये फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं होगा. ओके, सिर्फ हमको इसमें ध्यान देना है. आर स्क्वायर दैट इज 2 डेल्टा आर बाई. ओके, समझ में आ गया. 2 पावर को सामने लाना है और डेल आर बाई आर, डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई डेल बी. देयरफॉर एरर, व्हाट इज द एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया? एरर इज सरफेस एरिया को हमको कैलकुलेट करना है इसको, दैट इज 4 पाई इंटू आर मीन्स दिस इज आर 2.1. ये नहीं आएगा, ये जो है ये डेल आर है. ओके, ये आर है, आर प्लस माइनस डेल आर. ओके, तो आर मीन्स सिर्फ हमको यही वैल्यू इंटीजर पार्ट लेना है. तो एरिया का यूनिट है सेमी स्क्वायर. वी कैन पुट इट इन कैलकुलेटर. 4 इंटू pi into 2.1 square. So you can get 55.4 semi square. Now error in surface area delta is equal to 2 into del r by r. Del r means 0.5, r means 2.1 into s, ये s मल्टीप्लाई होगा, इसका वैल्यू है 55.4. ये सिर्फ एरर, इसका एरर इन सरफेस एरिया का वैल्यू है. सो 2 इंटू 0.5 इंटू 55.5 इंटू 55.4 divided by 2.1. So you can get 26.38. 26.38. Okay. So you can get 26.38. Okay. Therefore, the area, surface area
with error limits is s plus minus delta s का वैल्यू 55.4 प्लस माइनस 26.38 सेमी स्क्वायर। इसी तरह से हमको सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आई होप हम लोग कर सकेंगे। इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। 26.38 को अगर हम 1 डिजिट फॉर्मूला में लिखना चाहे तो इसको सिग्निफिकेंट डिजिट हम अगले दिन देखेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है। तो अगर उसमें हम लिखे तो ये 4 हो जाता है, बिकॉज अगर 26.38 को राउंड ऑफ किया जाए तो 1 डिजिट अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट लेना है तो उसमें काट ऑफ कीजिए, उसका अगला जो डिजिट उसको अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो इससे 1 ऐड हो जाता है। तो ये यहाँ पर 8 है, दैट इज ग्रेटर देन 1, सो 38 becomes 4. So the result is 55.4 plus minus 26.4 सेमी स्क्वायर। ओके, किसी भी फॉर्मूला अगर देता है तो यही फॉर्मूला होगा। समथिंग, let us consider one more equation, that is if we can get some relation that is x equal to a cube b square by c cube. So हमको x का एरर पता करना है। So we can get delta x by x is equal to 3 del a by a plus 3, sorry, the power is 2, that is 2 delta b by b plus डिवाइड हो तभी भी प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन हो तभी भी प्लस होगा, प्लस 3, अगर यहाँ पर लिखते हैं प्लस 3 डेल सी बाई सी। हमको डेल ए डेल बी डेल सी का वैल्यू और ए बी सी का वैल्यू बोल देगा। तो अगर हमको यहाँ पर बोलता है कि परसेंटेज ऑफ ए इज 1%, परसेंटेज ऑफ एरर इन परसेंटेज ऑफ ए इज 1%, परसेंट ऑफ बी इज एरर इज 2% and percentage of C is 3%. Therefore, what is the value of percentage of A? That is delta A by A into 100. This is 1. This value is 1. So, अगर ऐसे प्रॉब्लम आया तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा x by x अपॉन 100, तो सभी से 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 डेल a by a into 100 प्लस 2 डेल b by b into 100 प्लस 3 डेल सी बाई सी इंटू 100। सो हमको परसेंटेज ए दैट इज डेल ए बाई ए इंटू 100 पता है कि 1, सो 3 इंटू 1 प्लस 2 डेल बी बाई बी इंटू 100 मीन्स 2, सो 2 इंटू अगेन 2 प्लस 3 इंटू डेल सी बाई सी इंटू 100 मीन्स 3, सो 3 इंटू 3, सो व्हाट कैन वी गेट 3 प्लस 4 प्लस 9, से 4 plus 7, 7 plus 9, 16. So, finally we can get that is the percentage error in x is 16%. In this way we can solve many numericals. तो अगले दिन हम लोग सिग्निफिकेंट रीजन के बारे में थियोरी और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।